Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome back to lecture number 29 of macroeconomic course. I briefly recap what we have done in the previous lecture. If you remember, so we have revised the whole course which we have studied in 28 lectures about macroeconomics. We talked about in previous class about the different concepts of macroeconomics that we have learned during the whole course, where first of all I talked about the science of macroeconomics, what macroeconomics is all about. As we know that when we talk about the economy as a whole, when we study the economy as a whole, that's known as the macroeconomics. Like if we talk about the growth rate of an economy, that comes under the scope of macroeconomics. If we talk about the concept of unemployment, poverty, inflation, if we talk about the concept of balance of payments and so many other factors जिसकी हमने बात की, we talked about the aggregate demand, we talked about the aggregate supply. Then we also talked about, we spent few lectures on the economic fluctuations, what are the factors which are the cause of economic fluctuations, तो जिसको हमने details में discuss किया. After that, we have discussed three important concepts in macroeconomics, like we talked about consumption. So what are the consumption functions given by different economists as far as macroeconomics is concerned? तो जहाँ पे हमने Keynes के consumption function की बात की, we talked about Friedman के consumption function की बात की, we talked about this Simon Kuznets के consumption. So we talked about different consumption functions and compares how these consumption functions are different from each other. And then we talked about the investment की हमने बात की, which is one of the important parameter of macroeconomics. Investment functions की बात की, types of investment की बात की. हमने कहा कि तीन तरह की investment होती है. One is the business fixed investment, the other is inventory investment, then the third is residential. तो तीनों को हमने डिटेल में डिस्कस किया और हमने ये कंक्लूड किया उस चैप्टर में. हमने ये देखा था कि इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट कम होती है, एंड वाइस वर्सा. After that, we have discussed something about money and demand. So that was the last part of the course. We discussed different function of money, and then we talked about how banks helps to create money supply in the country. और उसमें हमने different systems की बात की और हमने देखा कि which system is more appropriate to create money in the country and the economy. And then after that we talked about the second part of that particular chapter, and that was the money demand, जहाँ पे हमने दो different money economists के point of view के बारे में बात की and talked about two types of demand for money functions. एक जो हमने traditional economists की बात की and दूसरा हमने Ricardian view की बात की कि what Ricardian say. According to traditional economists, they say that the demand for money depends on the expected returns on stock, expected return on assets, expected returns on bond, expected inflation and wealth. As far as Ricardian demand for money is concerned, they said that demand for money is a function of interest rate, income, as well as the cost, which is F, cost of traveling to the bank to draw the money, right? तो तीन factors पे depend करती है. उसके बाद हमने ये देखा, हमने ये कहा कि how this demand for money function is different from the previous demand for money function जो हमने शुरू के chapter में हमने जिसकी बात की थी. तो हमने ये कहा the factor which is different from the original demand for money function is the F, which is the cost of going to the bank to withdraw the money, right? So that was the last part of the course जिसकी हमने बात की थी. As you know that आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं 29th lecture में, we are going to start the last part of the course, and where we are going to try to learn all those concepts which we have learned in this course about the macroeconomics,
with reference to Pakistan economy. So we'll discuss different aspects, different parameters of macroeconomics with reference to Pakistan economy. और आज का लेक्चर जो 29th लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे, हम आज के लेक्चर में पिछले 50 सालों की इकोनॉमी, व्हाट हैपेंस इन पाकिस्तान इकोनॉमी ड्यूरिंग द लास्ट 50 years, राइट? तो उसको रिव्यू करेंगे, देखेंगे व्हाट वर द प्रॉब्लम, व्हाट वर द इश्यूज ड्यूरिंग लास्ट 50 years दैट द इकोनॉमी हैज फेस्ड. और आफ्टर दैट in the subsequent lecture हम बात करें different sectors की, like we'll talk about agriculture sector, we talk about manufacturing sector, we talk about balance of payment, we talk about finally talk about the poverty, we also talk about the monetary and fiscal policy. So these are some of the specific areas where we would like to discuss these macroeconomic variables with reference to Pakistan economy. So we'll start now the first part of Pakistan economy, that is about the 50 years, how economy behaves in 50 years of Pakistan economy. Now what we are going to learn in today's lecture, the sequence of our today's lecture is about, first we have talked about economic eras, different eras, different time periods of economics in Pakistan, and then we'll talk about structural adjustment programs, structural changes in Pakistan. उसकी बात करेंगे कि how these structural adjustment programs are helpful, were helpful for Pakistan economy. So we will try to review the Pakistan economy as a whole in the last 50 years. So we start 50 or 65 years of development. तो उसकी हम बात करेंगे कि किस तरह से हमने हमारे मुल्क में इकोनॉमी में प्रोग्रेस हुई, क्या प्रॉब्लम्स फेस किए. तो पिछले 50-60 सालों में हम अपनी इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे. So we start with the laying foundation. We start from the first era. We'll talk about 1947 to 1958. So we'll talk about these 10-11 years. So what happened to Pakistan economy in this area, in this era, in this time period. In this time period, that was from 1947 and to 1958, Pakistan basically predominantly was an agrarian economy, and at that time it was an underdeveloped country, underdeveloped society, and it was a new developed independent state. So basically in 1947 जो है पाकिस्तान जो है आज़ाद हुआ था, मुल्क बना था. जो most of this part was depending on it was the agrarian society, and it was the undeveloped society basically. There was little industry at that time. In this time period, only few services. Service sector was very few and minimum, and practically no infrastructure for the growth of the economy. And if we talk about there were adverse international conditions and precarious domestic situations. The domestic situation was worse. There was political instability, there was governance issues, there was poverty issues, unemployment issues. So the bureaucracies of the government or of the country attempts to keep Pakistan on its feet. उसने कोशिश की ब्यूरोक्रेसी ने इसको अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए. लैक ऑफ कैपिटल था, ट्रेड जो है वो सरप्लस डेफिसिट में जा रही थी, इट वाज नॉट इन सरप्लस. तो देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड. 1947 से 1958 की बात करें तो बहुत सारे इश्यूज थे. इंडस्ट्री नहीं थी, ज़्यादातर इन्हिसार एग्रीकल्चर पे था, अंडर डेवलप्ड कंट्री थी, अंडर डेवलप्ड सोसाइटी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, सर्विस सेक्टर नहीं था, इंटरनेशनल कंडीशन फेवर में नहीं थी, डोमेस्टिक सूरत हाल बहुत ख़राब थी. तो दैट 10 years टाइम पीरियड वाज नॉट ए गुड टाइम पीरियड इन पाकिस्तान इकोनॉमी. And now we'll come to the decade of 1958 to 1968.
तो इन 10 सालों की हम बात करेंगे। सबसे पहले व्हाट वर द अचीवमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड इन 1958 एंड 1968। 10 सालों में क्या अचीवमेंट्स की हमने, हमारी इकानमी ने, हमारे मुल्क ने। एंड देयर वर कंसिडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन 10 सालों में देयर वर कंसिडरेबल राइज इन इकोनॉमिक ग्रोथ इन रियल GDP ऑफ द कंट्री। एंड ऑफ कोर्स व्हेन ग्रोथ वाज देयर, इकोनॉमी वाज ग्रोइंग, so there was development also in the economy. Significant leaps were made in industrial and agricultural production. So there was a significant rise and increase in the industrial production as well as in the agricultural production. तो agricultural production बढ़ी इन दिनों में, इन 10 सालों में, और agricultural production भी बढ़ी. So model capital economists, focus was on model capitalist economy. Now what is model capitalist economy? Basically this is an economy in which everyone has the right to invest, invest in the economy, to be part of the economy as and how they decide, right? So that is the sort of कैपिटल इकोनॉमी जिसमें हर एक इंडिविजुअल को, हर एक को राइट होता है अपनी इनकम को खर्च करने का, राइट इन्वेस्ट करने का एज दे वांट, एंड दिस इज नोन एज द, तो उस वक्त जो है ना, इन दिस वे द इकोनॉमी स्टार्ट प्रोग्रेसिंग एंड इंक्रीजिंग इन ए पॉजिटिव वे. High growth rate in manufacturing sector. In this particular time period, the manufacturing sector basically it was in growth, and the growth rate was very high. There was increase in exports. So when manufacturing sector was increasing, there was a growth in the agriculture sector as well. So the exports of the country had increased in that particular time period, and progress in agriculture sector. So Pakistan has made a tremendous progress, Pakistan economy, in these 10 years from 1958 to 1968. Agriculture sector में भी progress हो रही थी, manufacturing sector में progress हो रही थी. The rulers are the policy maker based on the model political capitalist economy, and then of course this helps to the growth of economy and development in the Pakistan economy. So these were some of the significant achievements in that particular time period. Now we'll talk about the policy failures in that particular time period, that was 1958 to 1968 की बात करें. क्या failures जिनका हमें सामना करना पड़ा? इंक्रीज डिस्पैरिटीज इनकम में जो डिस्पैरिटीज हैं वो बढ़ गई, जो गैप है बिटवीन पुअर एंड रिच वो बढ़ गया इस टाइम पीरियड में. जो अमीर थे वो अमीर तर हो गए, जो गरीब थे वो गरीब ही रहे, ज़्यादा गरीब हो गए. concentration of economic prosperity, and similarly economic prosperity, economic activity ये वो भी concentrated थी. Only few families, few big investors have basically were contributing to the economy, and they have control over the assets of the economy. Social sectors were neglected. So अगर हमने देखें कि social sector पे ज़्यादा focus नहीं किया गया, the spending and investment on education, health and so on was little in this time period. So social sector was neglected in this era of Pakistan economy. Little or no increase in real wages. Wages of the laborers will remain same, almost very small or minimal increase in real wages, or most of the time it remains same during this 10-year time period. Trade was highly controlled. The trade was very controlled. It was a closed economy. There was a lot of restrictions on the exports and imports of the country. So it was a sort of closed economy. In this was one of the failure of policymakers. Distortions of local market because of overvaluation of exchange rate. So exchange rate there was overvaluation of exchange rate. So domestic market में जो distortion पैदा हो गई थी, there was problem for the domestic investors. So these are some of the failures of this particular time period, जिसमें हम कह सकते हैं कि इनकम डिस्पैरिटी बढ़ गई इस टाइम पीरियड में, गरीब और अमीर में फ़र्क बढ़ गया, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, इनकम प्रॉस्पेरिटी है वो चंद लोगों के हाथ में आ गई, और गवर्नमेंट की तरफ से सोशल सेक्टर वाज नेग्लेक्टेड. There was little investment, low investment, low spending on social sector programs of for the society in the country. Real wages में इजाफा नहीं हुआ, no change in real wages in this time period, or it was a sort of closed economy in that particular time period. तो
कुछ अच्छी बातें भी हुई इस टाइम पीरियड में जैसा कि हमने देखी, और ऑफ कोर्स देयर वर सम फेलियर्स ऑफ पॉलिसीज इन दैट पर्टिकुलर टाइम, उसके भी हमने बात की. Now we'll come to the bad luck years and the good luck years. You can say, if we talk about achievements, so we can say that अच्छे साल थे. अगर if we talk about failures, so these were the bad luck years in 1971 to 1978. Now what were the achievement of that in that particular time period? Foundation for future growth and development. So foundations were laid by the government, by the policy maker, and for the development in this time period. Basic industries were set up, small industries, SMEs, focus was on small industries, so basic industries to produce goods and services were set up in the country, and basis for capital good industry. So government has provided incentive for the people who want to invest in basic for capital goods industry. उस वक्त मिडल ईस्ट में भी बूम आया था, तो लॉट ऑफ पीपल वेंट टू मिडल ईस्ट, एंड देन जो पैसा है, कैपिटल इनफ्लो है, इमिग्रेशन जो क्या कहते हैं आप उसको, रिटर्न्स, जो लॉट ऑफ मनी वाज रिमिटेड, रेमिटेंसेज जो हैं इस दौर में ज़्यादा इजाफा हुआ था. दिस वाज एन अचीवमेंट. लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज, गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड liberal economic policies, flexible economic policies during this time period. Foreign exchange earnings doubled because of devaluation. So because of the devaluation of the currency in that particular time period, foreign exchange जो है वो that was double. तो ये जो 7 साल हैं, 8 साल हैं, 1971, 1977 में, तो there were some achievements of the government of the Pakistan. क्या achievements थी कि government has laid down the foundation of growth and future growth and development in the country. Basic industries set up हो गई, basis provide की गई for the capital goods industry को provide की गई. इस दौरान, इस टाइम पीरियड में मिडल ईस्ट में काफ़ी बूम पीरियड था, और द पीपल वेंट टू मिडल ईस्ट, माइग्रेटेड टू मिडल ईस्ट एंड दे रिमिटेड मनी, और उस वजह से मुल्क में पैसों में, कैपिटल में इजाफा हुआ, इकनॉमिक हालात बेहतर हुए. गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड लिबरल इकनॉमिक पॉलिसीज इन दिस टाइम पीरियड. बाय अडॉप्टिंग लिबरल economic policies, the government has encouraged investors, whether they are domestic investors or foreign investors, so they encourage and created economic activity in the country, and foreign exchange was doubled in this time period. How it was doubled in this time period? It was doubled because of the devaluation of the currency. So this time period, these are the significant achievements of this time period between 1917 and 97. Again, there were failures, significant failures of this time period. What are the failures of this time period? We can say that there was events behind control that affected economic program of this era. Now, what was? Because the East Pakistan was separated from Pakistan, तो जिसकी वजह से इकोनॉमिक सिचुएशन थोड़े से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इकोनॉमी में आ गई, उसकी वजह से, एंड दैट दोज जो हालात थे, इवेंट्स थे, वो हमारे पाकिस्तान गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं थे, एंड उसकी वजह से जो हालात में ख़राबी आई, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, जिसकी वजह से इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है, इकोनॉमिक प्रोग्राम्स हैं, हमारे इफ़ेक्ट हुए. डाउनवर्ड ट्रेंड इन ग्रोथ, तो उस वजह से जो ओवरऑल ग्रोथ इन इकानमी है, जो जीडीपी ग्रोथ है, एज वी नो दैट जीडीपी इज़ वन ऑफ द मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में उस टाइम पीरियड में कमी वाक़ आई उन हालात, उन वाक़यात की वजह से. अनदर फेलियर वाज दैट the concentration of economy or the government was on nationalization. So nationalization program introduced किए गए, so the focus was on nationalization. जितनी भी कोई privatized industry थी, government ने उसको अपने control में ले लिया. So the focus was on nationalization instead of privatization. So cotton crops failure. कॉटन क्रॉप्स इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 1971 और 77 में कॉटन क्रॉप्स फेलियर हो गई थी. 97 में एक फ्लड भी आया था मुल्क में, एज यू रिमेंबर, इफ़ यू रिमेंबर, दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट flood in Pakistan. Now because of, as you know, that most of the exports
are from the agriculture sector of Pakistan. So बहुत सारी जो exports हमारी हैं agriculture sector से हैं. तो in this time period में जिसमें हमने बात की कि it was worse for cotton crops and इसमें फ्लड भी आया था. फ्लड की वजह से काफ़ी इफ़ेक्ट हुई एग्रीकल्चर पे. जब इफ़ेक्ट हुआ तो नेचुरली हमारे में एक्सपोर्ट जो है पाकिस्तानी एक्सपोर्ट भी इफ़ेक्ट हुई इस टाइम पीरियड में. जब एक्सपोर्ट में इफ़ेक्ट हुआ तो देयर वर क्राइसिस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली क्या है? इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस which can take place between the two countries in terms of export and imports, and that is the trade balance. It also has the capital account, that is the capital inflow and inflow. So because of the less exports in that particular time period and more imports, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था इस अरसे में उसमें काफ़ी क्राइसिस पैदा हो गए थे. बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो वाज नॉट इन इक्विलिब्रियम, इट बिकेम वर्स. सो डिवैल्यूएशन ऑफ पाकिस्तानी रुपीज़, तो पाकिस्तानी करेंसी की जो वैल्यू है इन द इंटरनेशनल मार्केट दैट वाज डिवैल्यूड, हमारी जो वैल्यू कम हो गई थी. तो दीज वर सम ऑफ द फेलियर्स ऑफ दिस टाइम पीरियड. तो हमने बात की, वी टॉक्ड अबाउट 1971 एंड 77 की हमने बात की. हमने ये कहा कि इसमें देयर वर सम सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन दिस टाइम पीरियड. वो क्या क्या थी कि गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टू द सोसाइटी, टू द इंडिविजुअल, टू द फर्म्स इन द कंट्री, एंड दे प्रोवाइडेड देयर वर बेसिक इंडस्ट्रीज वर सेट अप in the economy. Government provided basis for a capital goods industry. Middle East में boom की वजह से remittances में इजाफा हुआ. Government has adopted liberal economic policies in this time periods, and currency की devaluation की वजह से foreign exchange जो है वो double हो गया इस time period में. तो these were the significant achievements of this time period, which is 71 and 77 का time period जो है. उसके बाद हमने ये कहा कि इसमें काफ़ी फेलियर्स भी थी इस टाइम पीरियड में. फेलियर्स क्या थी कि जो बहुत सारे इवेंट्स जैसे कि सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड सम अदर इवेंट्स विच वर नॉट इन कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, तो कुछ इस तरह के हालात भी पैदा हुए. तो उसकी वजह से जो देयर वाज अ डाउनवर्ड ट्रेंड इन इकोनॉमिक ग्रोथ इन दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड. तो अगर आप जीडीपी के ग्राफ ड्रा करें, जो कि हमने पिछली क्लास में अगर हमने देखा था, हमने ड्रा किया था, तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यू कैन सी दैट because of the crisis, because of events which occurred in the country, उसकी वजह से जो there was a downward trend in the growth of GDP in the country. Moreover, another failure of the economy was बहुत सारे जो एसेट्स हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, they were given to the public or to the government. नेशनलाइजेशन पे गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस था, not instead of privatizing the units or privatizing the if encourage not only incentive to privatize the economy. एक और जो फेलियर थी इस टाइम पीरियड की, दैट वाज द क्रॉप फेलियर. एंड फ्लड भी आया था 1971 में, बहुत बड़ा फ्लड आया था जिससे हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ऑलमोस्ट तबाह होकर रह गया था, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स में कमी वाकई हुई. एक्सपोर्ट में कमी से हमारा कैपिटल जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, दैट वाज इन ह्यूज क्राइसिस. एंड in this time period there was a devaluation of our Pakistani rupees in the international market. These were some of the achievement of this time period, which was between 71 and 77. Now we'll talk about the second military government regime. जो पहला मिलिट्री regime था, that was 1958 to 1968 की जो हमने बात की. उसके बाद अब हम बात करें पाकिस्तान इकानमी में जो सेकंड मिलिट्री regime आया, और जो कि था between 1977 और that remains between 1977 and 1988. So that was the longest military regime in the country. Almost 11 years तक रहा ये जो regime है. So what are the achievements of this regime basically? तो first of all हम बात करेंगे achievements की, progress की जो इस regime में हुई, इस time period में हुई. First of all, in this regime the government has adopted liberal economic policies. Now when we talk about liberal economic policies means there was policies in the country about
liberal economic policies to encourage investors, to encourage people to invest more, to save more in the country, right? जब investment ज़्यादा होगी, of course output ज़्यादा होगी, growth होगी और development होगी. तो इसी तरह इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो उसमें भी गवर्नमेंट ने इस टाइम पीरियड में लिबरल पॉलिसीज अडॉप्ट की, और लिबरल पॉलिसीज की अडॉप्शन से हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स में इजाफा हुआ, बैलेंस ऑफ ट्रेड बेहतर हुआ, कैपिटल अकाउंट बेहतर हुआ. गवर्नमेंट हैज़ फोकस्ड ऑन हायर इंडस्ट्रियल ग्रोथ. सो गवर्नमेंट ने फोकस किया कि शिफ्ट किया फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर टू दी government has shifted its focus from the agriculture sector to the industry, right? So government tried to provide incentive to the investors, whether they're domestic investors or foreign investors, and they provide policies, flexible policies, liberal policies to promote industrial growth in the economy. So this was again a significant achievement of this military regime. तो industrial growth पे ज़्यादा focus किया गया इस time period में. उसके बाद second economic fluctuation, second economic revolution because of remittances from the Middle East and aid from abroad. सबसे ज़्यादा aid जो आई है पाकिस्तान में, so that was the period of 1977 and 1988. तो और remittances भी सबसे ज़्यादा इस टाइम पे, जैसा कि मैंने कहा पिछली स्लाइड में हमने बात की कि 1970s का जो पीरियड है, and there was a boom in Middle East economy. उस बूम की वजह से बहुत सारे लोग, पाकिस्तानी जो लेबर है वहाँ पे पाकिस्तान से बाहर चली गई, मिडल ईस्ट में चली गई, और जिसकी वजह से रेमिटेंसेस आए मुल्क में, रेमिटेंसेस आए, फॉरेन एड आई. तो when there are more remittances, capital is coming inside the country in terms of remittances and aid की फॉर्म में जो है पैसा आ रहा है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं और ग्रोथ होती है इकोनॉमी में और डेवलपमेंट होती है. और एमरजेंसी ऑफ मिडिल क्लास जो इम्पोर्टेंट बेसिकली कंट्रीब्यूशन है, जैसे अचीवमेंट है इस मिलिट्री रजीम की, इस टाइम पीरियड की पाकिस्तान के हवाले से, जो मिडिल क्लास है दैट इमर्जेस इन दिस टाइम पीरियड, राइट? So that is the significant achievement of this time period. So middle class is somewhere between the rich and poor. So most of the people who are middle income earners, they emerges in this time period. But of course there are some failures of this time period, significant failures of this time period. कौन कौन से failures हैं उनकी हम अब बात करेंगे. Martial ruler inflicted deep-rooted damage to Pakistan society. Basically, that was the army, or that was the military regime. So there was a martial rule that inflicted deep-rooted damage to Pakistan society. Pakistan society को basically in terms of its image जो है internationally उसमें नुकसान पहुंचा. सो पाकिस्तानी लोगों को बाहर में अच्छे अंदाज में नहीं देखा जाता था. सो ड्रग्स एंड आर्म्स कल्चर इन पाकिस्तान इन दिस टाइम पीरियड, इस रजीम में ड्रग्स जो है और आर्म्स जो हैं कल्चर इन पाकिस्तान में फैला. सो आइदर थ्रू लीगल और इलीगल वे. सो ड्रग्स ज़्यादा स्मगल हुई, and then imports of arms were there. So drugs or arms का जो culture है that prevailed, that started in Pakistan in that particular time period. So, moreover जो government की policies थी, the policies of the government which were introduced, जो government ने introduce की इस time period में, इन सालों में, उनमें बहुत सारी confusions पैदा हो गई. Sometime जो confidence था investor का, so that was not there on the policies of the government. And so there was a lot of confusion in the country at that time period. Underutilization of resources. As we said, that one of the significant achievement of this time period of this military regime was that there was a significant aid which was coming to Pakistan in this time period, and there was increase in remittances.
उनकी जो यूटिलाइजेशन है प्रॉपर में इस दौर में नहीं की गई, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे खर्च नहीं किया गया, नॉट द एड एंड इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेमिटेंसेस was not spent on the development program or on the development of the society, on the program which leads towards the growth rate of the economy, तो उस पे खर्च नहीं किया गया. Instead of it was spent on the non-development expenditure of the society. So these were some of the problems or the failures, policy failures of that particular regime. So just I revised those achievements and failures of this regime. तो अब हमने बात की है 1978 से लेके 98 तक, that was the second military regime or this was the longest military regime ever in Pakistan. So there were some achievements in this particular regime. कौन कौन सी achievements की हमने बात की कि इसमें कोशिश की गई इस दौर में कि they tried to adopt liberal economic policies, and because of those liberal policies they encouraged to increase the industry, encourage investors to increase the growth rate of industry in Pakistan. Or second economic revolution because of remittances from the Middle East, economic revolution आप कह सकते, second economic revolution आया पाकिस्तान में because of the remittances from Middle East and aid from Pakistan, aid from abroad, from different countries which Pakistan had received during this time period. And this was the time period in which there was emergence of the middle class. तो इस time period में ये ऐसा time period है जिसमें middle class emerge हुई पाकिस्तान में. तो this was the significant achievement of this time period. Policy failures क्या हुई? Because it was martial rule, inflicted deep-rooted damages to Pakistan society. It created bad image of the society, of the individual of Pakistan abroad and domestically also. In this time period, this was the regime of drugs and arms culture in Pakistan ज़्यादा promote हुआ, ज़्यादा increase हुआ इस दौर में. Confusion about the policies was there between the policy makers, and there was underutilization of resources that were received from foreign and remittances during this time period. Now we'll come to the structural adjustment program of Pakistan economy during the time period 1988 and 1998 is the time period, and that is known as the era of structural adjustment program. Now what is basically structural adjustment? Basically structural changes. In this time period the economy has introduced the structural changes in the different sectors of Pakistan economy. So that is very, very important. So they want to restructure the whole economy of Pakistan in this time period to promote to increase growth in the economy and to improve the living standard of the economy. Now what were the significant achievements of this time period? अगर इसकी हम बात करें जो 1988 का है, the time period between 1988 and 1998, this is the time period where the democracy again comes back. It is the returns of the democracy in the country after a long military regime, जो कि अभी हमने जब बात की कि 11 साल military regime के बाद this was the time period जबकि दोबारा democracy आई मुल्क में, and this was the era of structural adjustment. Then the economy or the country the policy maker bring structural changes in the economy of Pakistan, economic liberalization, stabilization. So government has introduced programs of economic liberalizations and trade, and they focused on the privatization of the public units which were in loss in the previous years. This was the time period जिसमें कोशिश की गई कि privatization को ज़्यादा encourage किया गया, privatization commission बनाया गया जो कि वो यूनिट्स पब्लिक यूनिट्स जिनमें नुकसान हो रहा था उनको प्राइवेटाइज किया गया. जैसा कि हमने देखा कि पिछले दौर में ज़्यादातर कोशिश की गई कि बहुत सारे यूनिट्स को नेशनलाइज कर दिया गया, कम्स अंडर द गवर्नमेंट. तो उनकी जो परफॉर्मेंस है बेसिकली जो है वो
कमज़ोर हो गई, वीक हो गई, जिसकी वजह से ओवरऑल ग्रोथ में उस दौर में कमी आई। तो इस दौर की जो एक अचीवमेंट है, इसमें कोशिश की गई इन दिस टाइम पीरियड द गवर्नमेंट had tried to encourage or introduce privatizations and encourage private sectors to invest and to help or to promote growth in the economy and to bring economic activity in the country, to increase productivity, increase growth and increase employment in the country. So privatization की वजह से there was incentive, this provide incentive to the it provide incentive to the industry to provide more growth and the economy. उसके बाद बात हुई reduction in tariff rates to increase exports. Government has provide reduction in tariff rates to reduce exports, to increase exports. तो टैरिफ रेट्स को कमी की गई, कोशिश की गई कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए, इंपोर्ट्स को कम किया जाए। एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ को कम किया गया, इंपोर्ट्स पे टैरिफ बढ़ाया गया। तो जो कोशिश की गई इकोनॉमी में, गवर्नमेंट ने कोशिश की कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए, इंपोर्ट्स को कम किया जाए। जो गैप है बिटवीन एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, उसको इंपोर्ट्स और उसको कम किया जाए, ट्रेड बैलेंस को बेहतर किया जाए और ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव किया जाए। So these were some of the achievement of this era of structural adjustment that was between 1988 and 1998. Of course, there is a long list of failures of this era. What were the main failures? Macroeconomic crisis. Now, when we call macroeconomic crisis, it means there were crises about all parameters of the economy. Like what are the macroeconomic parameters? Low economic growth, low growth in real GDP in this era, and then we talk about employment. लोगों को रोजगार नहीं मिल, there was unemployment in the economy, inflation in the economy, there was a balance of payment deficit, poverty ज़्यादा हो गई थी. So there were a lot of macroeconomic crises in Pakistan. There was a huge budget deficit in this era of 98 and 1998. So this era faced a macroeconomic crisis in the country. Another policy failure was high taxation. Government introduced levied heavy taxes on the society, on the individuals. Because of high taxes, what were these problems of this high taxation? So low investment, low savings, high consumptions, low productivity and low employment and increase in unemployment. So high taxation was there in that particular time period. Again, another failure of that time period is low spending in social sector. So social sector में बहुत कम खर्च किया गया. That is the spending in education, health, migration, trainings. इन चीज़ों पे इस टाइम पीरियड में बहुत कम स्पेंडिंग्स हुई. ट्रेड रिफॉर्म्स रिलेटेड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. जब गवर्नमेंट अनाउंस्ड ट्रेड पॉलिसी, स्पेसिफिक ट्रेड पॉलिसी इन दिस टाइम पीरियड, और उस ट्रेड पॉलिसी की वजह से, ट्रेड रिफॉर्म्स की वजह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई मुल्क में. एंड देन कंटिन्यूस डिवैल्यूएशन इन पाकिस्तान रुपी. इन 10 सालों में कंटिन्यूसली पाकिस्तान की जो करेंसी है, हमारी जो रुपी है, उसमें डिवैल्यूएशन रही. देयर वाज अ कंटिन्यूस डिवैल्यूएशन इन पाकिस्तानी रुपी, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिवैल्यूएशन व्हाट हैपेंस, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिवैल्यूएशंस हमारी जो वैल्यू है, हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो महंगी हो गई, इंपोर्ट्स महंगी हो गई, एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती. तो ओवरऑल जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें प्रॉब्लम आ गई. इंक्रीज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस ऑफ यूटिलिटी. तो इस दैट वाज द टाइम पीरियड जिसमें जो प्राइस ऑफ यूटिलिटीज है, लाइक प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैस, those utility which are administered by the government, which are administered by the public authorities, उनके रेट्स में इजाफा हो गया. सो जब इन पे इजाफा हुआ तो द बर्डन ऑन पुअर, जो गरीब लोगों पर बर्डन है वो बढ़ गया.
high inflation rate. The rate of inflation, the growth in inflation rate was very high in this time period. Unemployment बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इकोनॉमी में. Privatization without proper policy. Government encouraged privatization but no proper legislation and no proper policy was adopted during this time period. Loss of sovereignty for the Pakistani state and its people. So the respect of Pakistan internationally and the respect of the people of Pakistan internationally was and there was a loss in the respect of Pakistan overall and the society or the individual of Pakistan at the international level. So these are some of the significant failures of this regime. If you compare with the achievements अगर compare करें policy failure के साथ तो failures ज़्यादा हैं, achievements कम हैं. So इस time period में overall though there were macroeconomic crises in the country. Now we'll talk about the situation in Pakistan, economic situation in Pakistan between 1998 to 2004. What happened to Pakistan? This is the time period that in this time period economic growth, there was acceleration in economic growth in the country. So अगर आप if you look at the GDP of this country, तो इस time period में this was the time period there was significant growth in the GDP of Pakistan economy. जब GDP बढ़ रहा था तो इसके क्या हुआ, what was the effect? Overall लोगों का income level बढ़ रहा था, purchasing power बढ़ी, standard of living बेहतर हुआ in 6-7 सालों में. There was increase in industrial production in this time period. This was a significant feature of this time period. Rise in export earnings, exports में इजाफा हुआ, तो export earning में इस time period में ज़्यादा इजाफा हुआ. Strong upsurge in investment. Government introduced policies in the country which encourage investment, encourage investment spending. They provided such environment to the investors which increased, which promote or increase investment spending in the country in terms of private investment, in terms of foreign investment. Another important feature of this time period was prepayment of high cost external debt. तो इस time period में कोशिश की गई the debt which the loan which government has taken from different donors and that was taken on high interest rate. So the attempt was made in this time period to repay back that loan in this to repay back that debt burden of the country in this time period. That was again a significant feature of this time period. Increase in foreign exchange reserves. So this was a time period, that the time in the economy of Pakistan in which there was a significant increase in the reserves in the country, in the Pakistan economy. तो इस time period में foreign exchange reserve में काफ़ी हद तक इजाफा हो गया था पाकिस्तान में. This was again a good or important feature of Pakistan economy during this time period. Another feature is the strategic re-entry into the international capital market. तो पाकिस्तान ने इसमें strategically कोशिश की to re-enter in the international capital markets. So capital markets जब बात आती है तो we'll talk about the stock market. The government has in this market, इस time period में देखें तो stock market में काफ़ी हद तक बेहतरी आई, stock index में काफ़ी improvement आई, right? तो government has tried to re-enter in the capital market, international capital market in this time period. Increase in spending on education. अगर आप इस time period को देखें, the focus of the government was increase in spending or increase in expenditure on education. Particularly focus was on higher education. So higher education अगर आप इस दौर में देखें, plenty of money was spent on higher education and that was needed, that is required because you know if you want to grow the economy significantly, अगर आप economy को promote करना चाहते हैं तो you need to spend more on education, more on health, in the country, right? जब आप एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं एजुकेशन पे, इकोनॉमी पे बढ़ाते हैं, हेल्थ पे बढ़ाते हैं तो इससे लोगों को it improve the living standard or education of the country, of education of the individuals and promote economic prosperity in the country.
Another important feature of this era was increase in foreign direct investment. Right? इस दौर में foreign direct में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ because of the stable economic policies, because of the flexible policies, and because of the one window operations. So these are some of the significant features of 98 and 2004 time period. तो दोबारा मैं थोड़ा सा इसको ओवरव्यू करूंगा कि बिकॉज दिस इज़ द टाइम पीरियड कि इन विच थोड़ा सा इकानमी जो है अपने ट्रैक पे आई, ग्रोथ हुई इकानमी में, ग्रोथ बढ़नी शुरू हुई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुई इकानमी में, एक्सपोर्ट अर्निंग्स में इजाफा हुआ इस दौर में, और इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया गवर्नमेंट में, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया, और इस दौर में कोशिश की गई फॉर द रीपेमेंट ऑफ हाई कॉस्ट एक्सटर्नल डेट, उसको कम करने की कोशिश की गई, और इस दौर में फॉरेन एक्सचेंज में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ। गवर्नमेंट ने एक और जो अहम कोशिश की इस दौर में, दैट द री एंट्री, स्ट्रेटेजिक री एंट्री ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी हद तक बेहतरी आई, जिससे गवर्नमेंट ने कोशिश की टू एंटर इन द इंटरनेशनल मार्केट। Government has increased its spending on education in this time period, and particularly focus was on higher education, ताकि human resource को develop किया जाए। जब लोग train होके वापस आएंगे, educate होके वापस आएंगे, they should contribute in the economy, they train more people, they educate more people। तो education आएगी तो मुल्क में जो ग्रोथ होगी वो ज़्यादा होगी, ग्रोथ ज़्यादा होगी तो ऑफकोर्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका बेहतर हो जाएगा। एक और जो इम्पॉर्टेंट फीचर थी इस दौर की, इम्पॉर्टेंट फीचर वाज इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी इजाफा हुआ इस दौर में। सो दैट इज अगेन अदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस पीरियड। नाउ विल टॉक अबाउट द टाइम पीरियड बिटवीन 2005 and 2007 and that is again an important time period for the economy. The economy picked up further in 2005 and 2006 and 2007 with GDP growth rate at over 8.4% for the first time in 8 years in the history of Pakistan. So this was I think this is one of the highest growth rate in GDP that comes in 2005 and 2007 time period. You know, this is one of the highest growth rate in Pakistan. So that comes in 2007 and 2008, 2005 and 7 time period. With sound macroeconomic fundamentals achieved, key sectors strengthened by reforms implemented in 4 to 5 years. This was the time period जिसमें कोशिश की गई कि मैक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं उनको स्टेबलाइज किया जाए, जो बेसिस है मैक्रो इकोनॉमिक्स की उनको बेहतर किया जाए, ताकि जो की सेक्टर्स हैं पाकिस्तान इकानमी में वो ग्रो कर सकें, और वो ग्रो करेंगे तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान इकानमी ग्रो करेगी। द इकानमी वाज वेल पोजीशन्ड टू सस्टेन 7% और मोर ग्रोथ इन द मीडियम टर्म प्लान ऑफ पाकिस्तान इकानमी। ये जो टाइम पीरियड था बिटवीन 2005 एंड 7 का, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट टाइम पीरियड इन पाकिस्तान हिस्ट्री। तो इसमें जो पाकिस्तान इकानमी का और इकानमी का जो ग्रोथ रेट था GDP का, दैट वाज अराउंड 8.4% इन द फर्स्ट टाइम इन 8 years इन पाकिस्तान। और इस दौर में ऑलमोस्ट जो ग्रोथ रेट मेंटेन हुआ दैट वाज अराउंड 7%, और कोशिश की गई टू इम्प्रूव द फंडामेंटल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स and key sectors were strengthened by introducing different reforms and implementation of those reforms in these 4 to 5 years in Pakistan economy. If you look in this table, just to give you an idea how much is the contribution of different sectors in GDP in Pakistan economy. तो इसमें हम कोशिश करेंगे, हम देखेंगे कि different sectors की क्या contribution है पाकिस्तान economy in different years. तो if we look at in 2006 and 7, the contribution in GDP was of agriculture was 0.92%.
it is in percentage. So the industrial contribution was 2.28%, and manufacturing contribution is 1.5%. Service sector contribution was to 3.6%, and the overall real GDP growth rate at fixed cost, if you please keep in mind, as I told you earlier, कि growth rate अगर GDP में आपने देखनी हो, it is better to take at a fixed prices, fixed cost, right? Not at the current prices, right? So this GDP growth rate 6.8% is at the fixed cost. तो अगर आप देखें 2006 और 7 की सूरत हाल को देखें तो अंदाज़ा करें, तो मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन है GDP में दो सेक्टर्स की है, that is industry and service sector. If you compare this with 2008 and 9, again the major contribution is from the service sector, and the manufacturing sector is more, and then the number 2, and then of course is the industry and agriculture sector. And if you talk about 2008 and 9, यहाँ पे देखें एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूशन जो थी जीडीपी में, जीडीपी ग्रोथ में, दैट वाज 0.86%. इंडस्ट्री नेगेटिव में चली गई, मैन्युफैक्चरिंग भी नेगेटिव में चला गया, एंड सर्विस सेक्टर वाज ओनली 0.89. So you can see that this was one of the worst year as far as the growth, the contribution of different sectors of पाकिस्तान इकानमी इज़ कंसर्न इन GDP. अगर आप देखें कि मुख्तलिफ सेक्टर्स की जो GDP है बहुत लो लेवल की कंट्रीब्यूशन है GDP में, और इफ़ यू लुक एट द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ GDP इन दिस ईयर वाज ओनली 1.72%. तो ओवरऑल जो ग्रोथ रेट है दैट केम्स फ्रॉम 3.6 to 1.72%. Now if you look at the figures of 2009-2010 की figures को देखें, again and the growth contribution of agriculture sector is up just 0.13%, which is very very low. And then if you look at the contribution of the industrial sector, that is 2.09. again it's a good contribution in this year. Manufacturing 1.0, service 1.5. So overall growth of real GDP was 3.76%. So it was comparatively a better year if you compare it with the last year 2008 and 9. So the growth was 3.76 as compared to the last year growth, which was 1.72. Now if we look at the 2010 and 11, you can see that the growth, the percentage, the sectoral contribution or the contribution of agriculture to the GDP growth is 0.26%. Industrial growth again comes into negative, no contribution of industrial sector in this particular year, and then the manufacturing sector just contributed 0.50%, 55%. Service sector is the main sector which contributed more in this particular year to the GDP growth, that is 2.15%. So overall growth of GDP in this particular year is 2.39. Now if we compare, if we look at this, we revise this table, अगर आप overall इस picture, overall picture को देखें, overall इस table को देखें, तो आपको क्या अंदाज़ा हो रहा है? So maximum growth rate was in 2006 and 7. That was one of the best time, best year among these few years, in which GDP growth rate was 6.8%. It is almost 7%, and the contribution of industry, manufacturing sector, and service sector was significant in that particular time period. अगर दूसरे सालों को देखें तो 2007 और 8 और 2009 और 10 का साल बेहतर है, जिसमें कुछ ग्रोथ बेहतर हुई है जीडीपी की, लेकिन 2008 और 10-11 का जो साल है, दैट इज़ नॉट ए गुड ईयर फॉर पाकिस्तान इकानमी, बिकॉज वी हैव वेरी लो growth rate in GDP, that is 1.72 in 2008 and 9 and 2.39% only in 2010 and 11. So this table basically give you overall picture. आपको अंदाज़ा हो सकता है कि मुख्तलिफ सेक्टर्स की क्या कंट्रीब्यूशन है. तो जैसा कि आपको अंदाज़ा है, जैसा कि हम बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है इज़ एन एग्रेरियन कंट्री, एक ज़रई मुल्क है, लेकिन अगर आप इस टेबल में देखें तो हाउ मच इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन पाकिस्तान इकानमी, विच इज़ वेरी लो as compared to industry, as compared to service sector. So the major contributor in GDP growth are the two sector is the industry and manufacturing sector. If we compare all these years, तो हमें as an agricultural country, जैसे जो कि हम claim करते हैं कि
हम ज़राई मुल्क हैं, तो वी शुड ट्राई टू फोकस मोर ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बाय रिफॉर्मिंग एग्रीकल्चर सेक्टर, ताकि ग्रोथ ज़्यादा हो सके एग्रीकल्चर सेक्टर की। जब एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ ज़्यादा होगी तो पाकिस्तान की ओवरऑल GDP की ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो इस टेबल का मकसद ये था आपको दिखाने का, जस्ट टू टेल यू, टू लेट यू नो कि हाउ मच इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन पाकिस्तान GDP ग्रोथ रेट। एज वी टॉक्ड अबाउट, जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले में हमने बात की स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम की, स्ट्रक्चरल एरिया की हमने बात की। नाउ व्हाट इज स्ट्रक्चरल चेंज बेसिकली इज ऑल अबाउट? Modern economies has given a clear evidence that changes in levels of some basic magnitude are generally associated with changes in composition, which implies structural change. मॉडर्न इकोनॉमीज़ की अगर हम बात करें और उसको अप्लाई करने की कोशिश करें इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी में, तो जो चेंजेस इन द लेवल ऑफ सम बेसिक मैग्नीट्यूड्स आर जनरली एसोसिएटेड विद चेंजेस इन कंपोजिशन। तो हमें बेसिक लेवल पे कुछ चेंजेस करनी चाहिए, और जो बेसिक लेवल पे चेंजेस करनी चाहिए दैट वुड बी एसोसिएटेड विद चेंजेस इन कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी, so which employ structural change in the economy. So this is the structural change. जब आप structural change की बात करते हैं, so structural change means some changes at the basic level. Basic level पे आप change लाते हैं, and then that change must be associated with the change in composition of the economy, and this is known as the structural change in the economy. Now, what are the reasons? क्यों हम करना चाहते हैं? Why we want to bring structural changes in the economies? One of the reason is that we want to modernize the economy, right? Want to compare. We want to come at the international level, right? So if you want to compare, you want to compete in the international market, you need to modernize the economy. Second reason is that we want to industrialize the economy instead of focusing on agriculture or other sectors. अगर आप structural changes लाते हैं, you want to restructure your economy. The focus or the reason behind is that you want to industrialize the economy, because most of the developed nations or developed countries are the industrialized economy. So अगर लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ की भी बात करें या ईस्ट एशिया कंट्रीज़ की बात करें, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो कि हमारे साथ आज़ाद हुई हैं और जल्दी तरक्की कर गई हैं, तो उन्होंने भी, आपने देखा होगा, चाइना, एशिया, कोरिया की बात करें, जापान की बात करें, मलेशिया की बात करें, थाईलैंड की बात करें, दे फोकस्ड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट? सो वन ऑफ द रीज़न to bring structural changes in the economy, to change structure of the economy, is to industrialize the economy. And the third reason is that to pace capital accumulation in the economy. So when you modernize your economy, bring industrial change in the economy, the third reason is that you want to accumulate more capital in the economy. When you accumulate more capital in the economy, जब capital accumulation बढ़ती है economy में, तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड जो है इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। तो दीज आर द थ्री मेन रीजन ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी। तो तीन रीजंस की हमने बात की। वन, द फर्स्ट रीजन ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज इज दैट वी वांट टू मॉडर्नाइज आवर इकोनॉमी। सेकंड, टू इंडस्ट्रियलाइज आवर इकोनॉमी। एंड the third reason to structural change is that to accumulate capital in the economy. If we want to accumulate capital in the economy, we need to bring structural change in the economy. So these are the three major reasons of structural changes in the economy. So what are the main sources of structural changes? हमने reason की भी बात कर ली, हमने define भी किया, but how we can bring that structural change in the economy, what are the possible sources of structural changes, उनकी हम बात करेंगे। Growth of population, natural or immigrant. So population growth is very very important. जब population बढ़ती है किसी country में, तो of course economic activity भी बढ़ती है. You can use, as we know that labor is one of the factors of production. So if labor is cheaply available or labor is abundant in the country, of course we can use labor more and less capital and produce goods and services at a cheaper rate. So
it can promote economic activity and increase production and economic growth. So one of the source of structural changes to bring changes in the composition of growth of population. Second, application of technical and mechanized process of production which change quality of output per unit of output. So second important source for structural change is the use of modern techniques in the production process, use of advanced technology in the production process. जब आप modern methods use करेंगे, advanced technology use करेंगे, of course आपकी production जो है per unit production जो है वो बढ़ जाएगी, and this could be one of the source of structural change. And the third is the adoption of technical progress. अगर आप जो दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे टेक्निकल एडवांसमेंट हो रही है, अगर आप उसको अडॉप्ट करते हैं तो दैट जनरेट ए कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ रियल पर कैपिटा इनकम विच इम्प्लाइज ए ग्रोथ of demand for goods and services, and which in turn promote the standard of living of the society. So there are three main sources of structural change. एक population है, दूसरा जो है application of technical and mechanized process in the production process है, तीसरा जो है technology कितनी आप adopt करते हैं, जो कि new technologies develop हो रही हैं with the passage of time in the society and at the international level, international market. We'll continue with the structural change. I will try to tell you something about Pakistan. How Pakistan has adopted this structural change. Pakistan today is less than half of the country it was in 1947, and the contribution made by East Pakistan to Pakistan society and economy was huge, जिसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान हुआ जब ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड हुआ पाकिस्तान से 1971 में, तो उससे काफ़ी हमें नुकसानात हुए because it was contributing to the economy significantly. Pakistan is basically an agricultural country and economy, but it's no longer true. अभी हमने देखा, पिछले टेबल में मैंने आपको बताया, जहाँ पे आपने देखा कि मुख्तलिफ सेक्टर की हमने कंट्रीब्यूशन देखी कि how each sector in Pakistan is contributing GDP. तो हमने देखा कि the agriculture sector has a least contribution in GDP growth rate. The maximum contribution in agriculture and GDP growth rate is by the manufacturing sector, industrial sector and service sector in Pakistan economy. So structural changes का फ़ायदा क्या होगा कि इससे basically it helps in the emergence and consolidation of middle class. तो middle class जब ज़्यादा होती है economy में किसी country में तो उससे growth ज़्यादा होती है. The nature of export from Pakistan has also changed dramatically during this time period of the structural change, and feudalism in Pakistan died a very long time ago. तो बहुत सारे लोग बात करते हैं कि बहुत सारे फ्यूडल अवेलेबल हैं और कंसंट्रेशन है वेल्थ की, वो अभी बात नहीं है. There is a lot of change and a lot of change in Pakistan economy as far as feudalism is concerned. उसकी जगह पे इंडस्ट्री ने ले ली है, सर्विस सेक्टर ने ले ली है, तो feudalism नहीं है. जैसा कि हमने देखा, most of the contribution of growth is coming from the service sector and from the industry and manufacturing sector. Just to tell you some of the figures, you can just give you an idea कि how Pakistan has developed from 1947 to 2011. If you look at in 1951, the population of Pakistan was 33 million only. Now if you look at 2011, the population is 180 million. Then contribution to GDP by sectors. In 1951, the contribution of agriculture sector was 53%. Now, in 2011, the contribution of agriculture sector is only 21%. There is significant decline in the contribution of agriculture sector in the GDP growth over the time of this 1947 to 2011. The contribution of agriculture and manufacturing sector in 1951 was only 7.8%. Now, the contribution of manufacturing sector is 12%, and the contribution of other sectors like service sector, industrial sector and so on, in 1951 the contribution of other sector in Pakistan economy was 39% only. But now the contribution of other sectors like service sector and other sectors in Pakistan economy or GDP is 67%. So if you compare the situation in 1951 and 2011, you can see that
the growth, the major contribution in GDP growth in Pakistan economy is by other sectors like service sector, industrial sector and so on, not by the agriculture sector in Pakistan economy. Now, how we can improve, how Pakistani economy can improve, an economic and social agenda for improvement, like restore confidence of the people of Pakistan, or the investors, private investor as well as foreign investor in Pakistan, initiate and sustain technological change, try to adopt the advanced technology techniques in the production process, foster stability and trust in social and cultural relationship. So this is another important agenda, जिस पे काम किया जा सकता है और इकोनॉमी को stabilize किया जा सकता है. So this is all about today's lecture. So we have learned what Pakistan economy has achieved and not achieved during last 50 and 60 years. तो ओवरऑल मैंने आपको व्यू दिया पाकिस्तान इकानमी का पिछले 60 सालों में 1947 से लेकर 2011 तक किस तरह से पाकिस्तान इकानमी में बिहेव किया डिफरेंट ईराज में. हमने डिफरेंट ईराज की बात की. सबसे पहले हमने 1947 से 1958 तक बात की, उसके 58 से 68 की बात की, 68 से 77 तक बात की, उसके बाद हमने रिमेनिंग एरियाज की बात की. द रिकमेंडेड बुक्स फॉर ये इस लेक्चर के लिए आपको मैंने बुक्स बता रहा हूँ, तो प्लीज़ लुक एट द स्लाइड एंड नोट डाउन दीज बुक्स. यू कैन रीड दीज बुक्स फॉर द पाकिस्तान इकानमी. लाइक इशरत हुसैन ने एक किताब लिखी है पाकिस्तान इकानमी के नाम से. It is available in the market. You can look also Zaidi S. Akbar 99 में issues in Pakistan economy पे उसने बात की थी. You can also see सईद के अमजद की एक किताब है 2007 में इसने लिखी थी इकानमी ऑफ पाकिस्तान. This is a very good book and you can learn about Pakistan economy in detail. And you can also get help from Pakistan Economic Survey. आप देखेंगे पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हर साल अपनी प्रोग्रेस रिव्यू करती है और इस सर्वे में पब्लिश करती है कि पिछले साल पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या प्रोग्रेस रही है. तो इफ़ यू लुक एट नंबर ऑफ इकोनॉमिक सर्वे आल्सो, दैट विल आल्सो गिव यू एन आइडिया ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी. So these are some of the references book which can tell you about the Pakistan economy. तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं. टिल द नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस यू. अल्लाह हाफिज़.